Good morning, everyone. Aji fifth number mock test ame MCQs तारा detailed answer and explanation ame discuss करिबा जोड़ा purely factual question ताकु just ame answer तारा जानी की we will proceed and जो questions रे टिके concept involve रोची ताकु thoroughly discuss करिबा. So this is test booklet number 5 of Gurukul preliminary mock test. सेशन टी डिस्कशन सेशन स्टार्ट करबा आगरु जस्ट मते क्लियर टिके कर दियंतु जो माने भी अछन कमेंट सेक्शन रे लाइव चैट रे कि मोर ऑडियो आ मु एठी जहां भी एनोटेट करूची पीडीएफ क्लियरली शो होउची कि नै वीडियो रे ए दीटा जिंस आगे क्लियर कर दियंतु विद इन 2 मिनिट्स देन वी विल स्टार्ट. Sorry. Okay. MCQ mock test discussion start करबा आगरु मु किछटा जिंस एठी आगो कहि देबा जाउ स्टूडेंट मानको. फर्स्ट कि ए जो MCQ डिस्कशन टा हबो मु पर MCQ 10 to 15 seconds मु देई पारे. ओके 20 seconds भी मु देई पारे डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन सो दैट कि समस्ते ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भितरे क्वेश्चन टी को आगो अटेम्प्ट करी कि मते लाइव चैट रे आंसर देबे एंड मिस्टेक्स आर एक्सपेक्टेड. मु कहूनी कि कहीं भी मिस्टेक करेनि समस्त को ठीक आंसर देवार अच्छी बट डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. इनफैक्ट ये जो सेशन टा एथि ही कि फॉर मेकिंग मिस्टेक्स हियर सो यू डोंट रिपीट देम इन द एग्जाम हॉल. ओके सो हेजिटेट कि एम्बारेस फील करिवार नै. जदि नॉलेज अच्छी भी दियंतु आ जदि किसी लैटरल नॉलेज बा लॉजिकल रीजनिंग लगै कि भी जदि एमसीक्यू सॉल्व करि परछथि ताहाले भी लाइव चैट रे आंसर देबे मते. ओके एंड आ गोटे कथा कीप नोट्स मु एडवाइस करिबी आ मु होप करूची कि समस्ते गोटे पेन आउ गोटे नोटबुक नहले कि आईपैड जो थरे भी जो माने कंफर्टेबल ई नोट्स हो कि पेन एंड पेपर नोट्स हो कि समस्ते नै कि चलतिबे राइट डाउन द एग्जैक्ट कांसेप्ट और फैक्ट जोगडा कि आपन नोट्स रे नाही आ ता ऊपर धर एमसीक्यू अछि आ मु तार कांसेप्ट की फैक्ट किछि एठी डिटेल रे डिस्कस कली सो ऐड दैट टू योर नोट्स. सो एथिरे कोन हबो दे विल बिकम योर हाई प्रायोरिटी रिवीजन टॉपिक्स. ओके स्टार्ट करिबा क्वेश्चन नंबर 1 रु. Which of the following best describes the demand pull inflation? ए चारोटी स्टेटमेंट भितरु कोटा डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करूची. फर्स्ट राइज इन प्राइसेस ड्यू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, राइज इन प्राइसेस ड्यू टू एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, fall in prices due to higher productivity, rise in prices due to money value appreciation. I'm giving 10 seconds. Easy question अछि economics ro. तो यार आंसर टी हबो बी राइज इन प्राइसेस ड्यू टू एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई. डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोन इन्फ्लेशन आगुरु जो फ्रेज टा लागु छे डिमांड पुल माने पुल टा फॉर्म होउची माने प्राइस राइज टा it is due to the excess demand so it is named as demand pull inflation. ओके डिमांड पुल इन्फ्लेशन केतेबेले हुए जेतेबेले जो एग्रीगेट डिमांड थाए मार्केट रे सेटा जेतेबेले एग्रीगेट सप्लाई थारु बढ़ी जाए तो सेतेबेले कोन हुए प्राइस
राइज करे तो ताकू कुआ जाए डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सो आंसर हम बी, राइज इन प्राइसेस ड्यू टू एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई. Second question, hyperinflation upare question achi is generally characterized by. Factual achi question. Inflation above 10% annually, inflation above 20% quarterly, inflation above 50% per month, inflation above 100% per year. Dosa second doji mu and your 10 seconds starts now. Factual question achi eta. तो मन रखिए जो टर्म आम इकोनॉमिक्स रे पढ़ी था हाइपर इन्फ्लेशन करी जदि आपण मानकर इकोनॉमिक्स क्लास हो सारी कि करुवे ताले जानिथिबे ताको केमिति डिफाइन करा जाए एटा होची गोटे प्राइस राइज इन्फ्लेशन अछि काना प्राइस राइज तो होची ही एबे हाइपर इन्फ्लेशन कोन हाइपर लागि गला ए जो वर्ड टा इन्फ्लेशन संगे एबे एबे एटा कोन कहूची कि जो इन्फ्लेशन रे जो प्राइस राइज टा हुए जेतेबेले सेटा 50% रो भी अधिका हे जाए पर मंथ बेसिस रे ताको कुहा जाए हाइपर इन्फ्लेशन. सो आंसर कोन बा आंसर बा सी, इन्फ्लेशन अबव 50% पर मंथ. Excuse me. Question number 3. Which index is India's primary measure of inflation after 2014? Inflation को इंडेक्स टा आफ्टर 2014 इन्फ्लेशन मेजर करिवार प्राइमरी मेजर इंडिया रे. फर्स्ट होची जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई बा पीपीआई. यस, 2 नंबर क्वेश्चन रो समस्ते एठी सब ठीक आंसर देचनी. प्रियंका सामल देन संदीप कुमार, वेरी गुड. नाउ अटेम्प्ट थर्ड क्वेश्चन. ओके 10 सेकंड्स ओवर. 2014 पर ठारू हमरो सीपीआई it is the headline inflation measure in India. Okay, next jiba 4 number question. A persistent increase in the price of pulses, eggs, meat and dairy products due to supply constraints. एई सबु एई चारटे जिंस रे सप्लाई कॉन्स्टेंट अछि माने सप्लाई एतेटा नाही तो तांकर जो इंक्रीज होची प्राइस रे इज नोन एज ताको कोन कुआ जिवो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, प्रोटीन इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. सिमिलर क्वेश्चन गोटे आमे नंबर 1 मे बी कि 2 रे डिस्कस कले. फर्स्ट एटी क्वेश्चन रे कोन कहिछि क्वेश्चन रे कहिछि कि तांकर प्राइस इंक्रीज कोथ पई अछि काइना सप्लाई कांस्टेंट अछि सप्लाई तांकर कम अछि तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो हबनी काइना एठी प्राइस राइज टा as it is no एटी कहिछि कि सप्लाई कम अछि तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हबनी. आंसर अब प्रोटीन इन्फ्लेशन कहीं एठी समस्त नोटिस करिवे पल्सेस हला एग मीट बा डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर द सोर्सेस ऑफ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो आर आंसर कोन हबो प्रोटीन इन्फ्लेशन. आ प्रोटीन इन्फ्लेशन होची गोटे एमिति गोटे स्पेसिफिक फूड ग्रुप रो इन्फ्लेशन जोटा कि सप्लाई शॉर्टेज रे सेटा कॉज हुए. अ स्पेसिफिक
Fifth number question. Which type of inflation is mainly caused by inefficiencies and bottlenecks in different sectors of the economy? Option number A, just a second. Option number A, structural inflation. Option number B, demand pull, wage inflation or asset inflation. फोर बी समस्त आंसर देते वेरी गुड करेक्ट आंसर जो मैंने भी देइछंदी आर आंसर हबो ए स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहले हमें कौन बुझू स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन सेतबळे अराइज हुए जेतबळे मार्केट रे इनएफिशिएंसीज थाए बा बॉटलनेक्स थाए इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बा सप्लाई चेन्स Question number 6. Which phenomenon reduces the real burden of debt on borrowers during the high inflation periods? आ भितरु को phenomenon borrowers ମାନଙ୍କ उपरु जो burden टा रहिला जो debt रो ताको reduce करे during high inflation period. Option देखिवा fiscal neutrality, monetary accommodation, inflation premium or erosion of real value. आंसर इज डी इन्फ्लेशन कौन करे जो हमर रियल वैल्यू रहिला जो फिक्स्ड डेट रो ताकू रिड्यूस करे सो सेटा बोरोवर्स मानको ऊपर गोटे फेवर क्रिएट करे सो इरोजन ऑफ रियल वैल्यू इज द करेक्ट आंसर sudden disruption in supply due to natural disaster leading to price rise refers to deficit inflation, supply shock inflation, money supply inflation or creeping inflation. कौन बार आंसर आर आंसर अब फर्स्ट ऑफ ऑल बी सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन एंड मु कहूची कौन पाई जितेबाला सडन आमर गोटे न्याचुराल डिजास्टर आसे धर साइक्लोन की फ्लड हो गला कि ड्रट हो गला तो न्याचुराल डिजास्टर रे कौन हम जहाँ आगुरी फूड सप्लाई होता ऑब्वियसली फूड सप्लाई रे रिडक्शन देखा जितेबाला सप्लाई रे आमर रिडक्शन देखागला शार्पली किंतु डिमांड तो सेम ही अच्छी लोकों को जो जेतिकी इनग्रेडिएंट्स आगुरी भी दरकार होता सामान दरकार होता एबे भी सेतिकी दरकार होची तो जितेबाला सप्लाई कम अच्छी डिमांड कांस्टेंट अच्छी तो से कौन हम प्राइस राइज हम प्राइस सडनली राइज हम आउ ए सिचुएशन टाको कहा जाए सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन ठीक अच्छी कहीं इट इज नॉट बिकॉज एक्सेस मनी और डेफिसिट फाइनेंसिंग कहीं शॉक आसला गोटे सप्लाई रे सेइतपई तो एठू हमें कौन प्रिलिम्स पॉइंटर उठेले कि जो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन हमर रही इक्वल्स टू इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय sudden supply fall.
8th question, 8 number question attempt करो. Which of the following indices measure inflation through the ratio of nominal to real GDP? CPI, GDP deflator, WPI, IIP. 10 seconds ଦଉଛି ମୁଁ. Easy question. जीडीपी डिफ्लेटर हबार आंसर ऑप्शन नंबर बी. जीडीपी डिफ्लेटर रो हमर फार्मूला कोन केमिति ताको कैलकुलेट करा जाए नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 एंड जीडीपी डिफ्लेटर मेजर कोन करे इट मेजर द चेंजेस जहाँ भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी रे प्रोड्यूस होची तार कोन प्राइस चेंज होची ताकू मेजर करे. सो एठी जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी ऑप्शन रे अछि से माने ओनली सिलेक्टेड बास्केट से माने सब जिंस कैटर करंतिनी तांकर किछि सिलेक्टेड बास्केट्स थाई किंतु जीडीपी डिफ्लेटर इट इज ब्रॉडर. ठीक अछि. सो एठी हमें कोन बुझिले कि जो जीडीपी डिफ्लेटर ता हमर रहिला इट मेजर्स द इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन यूजिंग नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी. फार्मूला टा मन रखिबे. Ninth question, cost push inflation primarily arises due to increase in consumer demand, monetary savings, production cost, foreign exchange, reserves. 10 seconds ଦଉଛି ମୁଁ. Ten seconds over. So answer of production cost. Kind of cost push inflation से primarily production cost जोगु ही production cost रा increase जोगु ही arise करी थाए. Cost push inflation कहिले हमें कौन बुझे टिके डिटेल रे कहि दउची मु. Cost push inflation सेतबेले हुए जेतबेले जो cost of production obviously सेटा increase करे. एठू तो हमें ऑप्शन रो जानिले. फॉर एग्जांपल जेमति कि गोटे फैक्ट्री रे धर एटी वर्कर्स माने काम करजदी एंड तांकर धर इंक्रीज हैला वेज रे वेज इंक्रीज हैला कि जो रॉ मटेरियल्स लागुची धर ए फैक्ट्री रे प्रोड्यूस होची पेन पेन पई जो रॉ मटेरियल्स लागुची से रॉ मटेरियल्स प्राइस रे धर इंक्रीज हैला आगरु धर पेन मे बी 10 रुपीस रे बिका होतला तो जेतेबेले वेज जो वर्कर्स माने रहउछंती रॉ मटेरियल जहा लागुची पेन प्रोड्यूस करिया को एंड एंड प्रोडक्शन ऊपर मे बी जदी हायर टैक्स भी लागी गला तो एथिरे कोन होउची ए सब जिंस जेतेबेले हायर हेई जाउची तो सेतेबेले प्रोडक्शन इज बिकमिंग एक्सपेंसिव हेई जाउची तो कंपनी अल्टीमेटली कौन करिवो सी तार प्राइस जो पेन हमर एठी जो फाइनल गुड रही तार प्राइस को से बढ़ेइबो एंड जेतेबेले प्राइस राइज हुए आमे जानिचे कौन हबो सेटा सेटा इन्फ्लेशन रे जीवो. सो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रही इट इज कॉस्ड बाय द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. क्लियर. नंबर 10, fiscal deficit financed through money creation usually leads to imported deflation, deficit induced inflation, structural deflation or seasonal inflation. 10 seconds ଦଉଛି ମୁଁ କଣ ବାର आंसर.
दीपांजलि सिन्हा 9 ର C करेक्ट आंसर वेरी गुड ओके तो आर आंसर हम डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन जेतेबेले गवर्नमेंट कौन करे गवर्नमेंट रो जेतेबेले गोटे फिस्कल डेफिसिट आसे एंड इंस्टेड ऑफ बोरोइंग सी कौन करे कि आरबीआई को पचारे whether it can print money for them or not it asks RBI to print money तो एथिरे कौन हो मनी सप्लाई बढ़िला मनी सप्लाई एटा शार्पली इंक्रीज कला इनफैक्ट मु कहबी जेतेबेले मनी सप्लाई बढ़ी गला इकोनॉमी रे विदाउट इक्विवेलेंट गुड्स और सर्विसेस कहीं ना जो रेट रे मनी सप्लाई टा एठी इंक्रीज हेजी कहीं ना गवर्नमेंट रो फिस्कल डेफिसिट अराइज कला सेति की मात्रा रे गुड्स एंड सर्विसेस तो प्रोड्यूस हेनी इकोनॉमी रे बा कंट्री रे जो फल रे मनी सप्लाई एटा इंक्रीज एथि पई हेची कहीं ना आरबीआई जस्ट इट प्रिंटेड मनी तो आपको कहते डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन और मोनेटाइज्ड डेफिसिट इन्फ्लेशन आंसर हम बी द मनी क्रिएशन और प्रिंटिंग मनी टू फाइनांस द डेफिसिट ताकू जो इन्फ्लेशन टा कुहा जाए ताकू कुहा जाउची डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन 11 number question. Which inflation category describes a moderate rise in price around 3 to 10% annually? Very factual question. इतरे किसी बुझियार नहीं. Creeping, walking, galloping, hyper. आंसर हम बी वाकिंग इन्फ्लेशन कौन एटा गोटे मॉडरेट इन्फ्लेशन एटी क्वेश्चन दे देइची यूजुअली 3 to 10% एनुअली जोटा बढ़े ताको वाकिंग इन्फ्लेशन कहंदी किंतु एटा हायर देन द क्रीपिंग इन्फ्लेशन हायर देन क्रीपिंग किंतु एटा स्टिल तथापि भी मैनेजेबल एटा सिग्नल एटा दिए कि जो इकोनॉमी हमर रहिची बा कंट्री रहिची इट इज ग्रोइंग बट प्राइसेस आर राइजिंग स्टेडीली इकोनॉमी में ग्रो करूची ता सहित प्राइस भी स्टेडीली राइज करूची से ए पिक्चर टा प्रोवाइड करे एठी हमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन रो जदी रेंज टा देखिबा सेटा होची 0 to 3% वाकिंग इन्फ्लेशन एठी देखिले 3 to 10% रहउची देन गैलोपिंग इन्फ्लेशन हमर एटा 10 to 20% आसी जीवो और डबल डिजिट एक्सट्रीमली हाई था एटा डबल डिजिट पळे आसला देन हाइपर इन्फ्लेशन तो आमे एटी ऊपर डिस्कस करले 20 50 100 पर मंथ जोटा कि एक्सट्रीमली हाई आउ अनकंट्रोल्ड ताको हाइपर इन्फ्लेशन कहंती 12th क्वेश्चन When RBI increases policy rates to control inflation, the step is part of fiscal policy. Very easy question. Monetary policy, income policy, or structural policy. आप आइंदा मु 5 seconds ही देवी. RBI जेतबेले policy rate adjust करे ताकू सेटा monetary policy रे जाए. B. An increase in the money supply without a corresponding rise in output is most likely to cause ऊपर एते गोटे क्वेश्चन डिस्कस कलेनी आपाई भी मु सेई अराउंड 5 सेकंड्स ही दउची कागिना जेतबेले मोर मनी अछि आउ सेटा चेज करूची सेम आउटपुट को आउटपुट बढ़िनी आउटपुट सेम ही अछि विदाउट अ करस्पॉन्डिंग राइज इन आउटपुट तो सेटा कोन क्रिएट करची इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करची डिसइन्फ्लेशन तो हबनी स्टैगफ्लेशन बा डिफ्लेशन तो हबनी इन्फ्लेशन ही हबो तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ही से क्रिएट करची
Which of the following is an effect of high inflation on our savings? Encourages long term deposits, increases real savings, erodes real value of savings, raises purchasing power. What will be the answer? 10 seconds starts now. ए सेम गोटे सिमिलर क्वेश्चन ऊपर ही डिस्कस करछे ए सिमिलर कांसेप्ट रे टिके डिटेल रे मु एटी कहि देबी 14 रो हबो आंसर सी इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स केमिति जितबळे इन्फ्लेशन टा हाई अछि तो सेतबळे मनी रो जो परचेसिंग पावर रहउची परचेसिंग पावर ऑफ मनी इट फॉल्स कहीं ना जेतबळे इन्फ्लेशन हाई अछि धर 10 रुपीस रे बा 100 रुपीस रे जदि आगुरु 10टा जिंस जने अफोर्ड करि परथला एंड इन्फ्लेशन जेहेतु हाई अछि एबे 100 रुपीस रे सीए मे बी 5टा की 7टा जिंस अफोर्ड करि परछि तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी एठी कोन हला एठी रिड्यूस हे गला इट फेल सो इवन इफ यू हैव दिस मच मनी सेव जदि एतिकी सेव भी करिक रखिचंदी तथापि भी आगुरु जेतिकी कमोडिटी अफोर्ड करि पारुथिला जणे सीए लेस कमोडिटीज अफोर्ड करि परिबो देन बिफोर दिस मीन्स जो रियल वैल्यू रहिला माने जो एक्चुअल वर्थ ऑफ सेविंग्स एटा डिक्रीज होची आंसर हबो erodes the real value of savings 15th question 15th number the term credit inflation refers to a situation where bank credit availability decreases excessive credit expansion increases purchasing power credit rating improves the inflation management interest rates fall below zero कौन बार आंसर 15 seconds होची mo पाई आंसर हबो बी excessive credit expansion increases the purchasing power केमती जो क्रेडिट इन्फ्लेशन हमर रहिला सेटा केतेबळे हुए क्रेडिट इन्फ्लेशन जेतेबळे बैंक कोन करंती बहुत गुडे लोन से माने डिस्ट्रीब्यूट करंती दे गिव टू मेनी लोन्स banks give too many loans and due to excessive credit or loan expansion लोक माने और बिजनेसेस जो रहिले से माने तापरे कोन कले से माने तांको हातरे एबे अधिका टंका अछि दे हैव मोर मनी टू स्पेंड और जेतेबेले तांको पाखरे मनी अछि and that to more money to spend and more money chasing the same goods तो इन्फ्लेशन कौन हम इन्फ्लेशन बढ़िबो तो एथिरे कौन हम एक्सेसिव क्रेडिट एक्सपेंशन इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर आ बाकी ऑप्शन गुडा टिके देखि दबा एनालिटिकल अछि बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस एटा होची ऑपोजिट हे गला क्रेडिट इन्फ्लेशन रो
and C रे कौन कही credit rating improves the inflation management नहीं एटा दीटा unrelated, they are not related, so C भी हबनी. Interest rate fall below zero, not the definition. So answer हमर कौन हबो B. Which of the following is not a typical measure to control inflation? आ भितरु कोउटा गोटे measure नुहे inflation control को measure करिवा को. Not a typical measure to control inflation. Reducing fiscal deficit, tightening monetary policy, strengthening supply chain management, increasing the subsidies on luxury goods. Answer about D. Increasing subsidies on luxury goods एटा गोटे typical measure नुह inflation को control करिवा को. कहीं ना inflation control करिया पई government and RBI, government plus R sorry RBI से माने कौन करंती, they try to reduce the demand. Usually they try to reduce the demand to reduce the fiscal deficit or improve supply. एई दिटा भितरु गोटे से माने normally करंती. ऑप्शन ए रे कौन देला कि reducing fiscal deficit reduces government borrowing and demand, helps control inflation. एटा एटा करेक्ट हबो. एठी पचारची नॉट करेक्ट, नॉट अ टिपिकल मेजर. एटा क्वेश्चन रे सब बेले पढुतिबे कोठी नॉट पचारची, नॉट करेक्ट पचारची कि करेक्ट पचारची. इट कैन बी अ मेजर रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट. देन टाइटनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी माने कोन, आरबीआई कोन करबे तार जो पॉलिसी रेट रहिची, रेपो हेला, रिवर्स रेपो सॉरी रिवर्स रेपो नो, सीआरआर हमर हेला बा एसएलआर हेला, आकु कोन करबे, आकु बढ़ाई देबो. आकु जेतेबेले बढ़ाई देबो सेटा मार्केट रे मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देला and inflation control ହେଇଗଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ tightening monetary policy. ଏଇ ଦିଟା correct ଅଛି. then strengthening supply correct ଅଛି ମାନେ as it is, the statements are correct, କିନ୍ତୁ question demand हिसाब रे correct नहीं. question पचारछि कि not a typical measure. ऑप्शन नंबर सी कहला strengthening the supply chain management. ଯେତେବେଳେ supply chain management ଟା strengthen ହେଇ जाए माने better logistic, transport, storage এই ସବୁ facilities ଆମର better ହେଇ जाए, it increases the supply and it reduces the prices. एटा भी स्टेटमेंट टा करेक्ट अछि. नॉट करेक्ट कोन हमर डी, इंक्रीजिंग सब्सिडीज ऑन द लग्जरी गुड्स. तो एटा क्वेश्चन डिमांड हिसाब रे सब इनकरेक्ट हे गला एंड ये क्वेश्चन डिमांड हिसाब रे करेक्ट हला. इंक्रीजिंग सब्सिडीज ऑन लग्जरी गुड्स माने आर जो इंक्रीजेस सब्सिडी इंक्रीज कर देले कोन हे होची, लोकंकर जो परचेजिंग पावर रहिची सेटा इंक्रीज होची, जोटा कि मोर कंजम्पशन को एनकरेज करूची ऑफ अननेसेसरी आइटम जेमती लग्जरी गुड्स रहिला. तो सेटा फर्दर कोन करिवो, इन्फ्लेशन को वर्जन करिवो, ताको कंट्रोल करिवोनी. एंड ऑल्सो जो सब्सिडीज जदि दिया गला लग्जरी गुड्स रे आर नेवर यूज्ड एज एन इन्फ्लेशन कंट्रोल टूल. सो डी इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. The concept where a fall in the general price level occurs continuously is known as disinflation, deflation, reflation, or stagflation. Answer कौन हबो? Very easy question अछि. Answer हबो 17 रो B, deflation. डिफ्लेशन एटा रिप्रेजेंट करे जो सस्टेन डिक्रीज इन प्राइस रहिला, इन्फ्लेशन रो उल्टाटा ताकू कुआ जाय डिफ्लेशन. डिफ्लेशन इक्वल्स टू in prices. Eighteenth,
CPI differs from WPI mainly because of CPI includes services while WPI does not. WPI includes services while CPI does not. WPI is used since 2014 as headline inflation. एटा हमें ऊपर discuss करिजे. CPI excludes food items. Your 10 seconds starts now. Answer about A. CPI includes services while WPI does not. मु कहिछि एमाने गोटे फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को कैटर करंती जेमति कि CPI जहा को आमे कोन कहूचे फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. It represents the retail inflation. जेमति कि आउ एथरे कोन कोन इंक्लूड हुए गुड्स प्लस सर्विसेज जेमति कि एजुकेशन हेल्थ ट्रांसपोर्ट ए सब एंड WPI कोन कोन इंक्लूड हुए ओनली गुड्स. It does not include services. WPI जहाँ को होलसेल प्राइस इंडेक्स कहती जे रिप्रेजेंट करे होलसेल इन्फ्लेशन को. And option C एठी जो कही छे ऊपर भी डिस्कस कर सकते. WPI is in used since 2014 as headline inflation. Wrong. Actually CPI use होची since 2014 as headline inflation. Assertion reason question. Inflation often increases income inequality in the economy. Reason hela the poor spend a larger proportion of their income on essential goods whose prices rise faster. चारोटी ऑप्शन पढ़ंतु assertion reason ऊपर देइछि कोटा ट्रू किए फॉल्स कोटा कहार करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आई एम गिविंग 15 seconds टू आंसर. आंसर अब ए दीटा जाक ट्रू अछि एंड जो रीजन प्रोवाइड हेछि इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इन्फ्लेशन एक्चुअली पुअर मानु को बेसी हर्ट करे कहीं ना दे स्पेंड मोर ऑफ देयर इनकम ऑन फूड एंड एसेंशियल आइटम्स फूड एंड एसेंशियल्स एंड जेतेबेले एसेंशियल गुड्स जो रहिला तार प्राइस जेतेबेले राइज करे प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स जेतेबेले राइज करे दे राइज फास्टर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. बट जो माने रिच रहिले जो रिचर क्लास रहिले से माने कोन करि परिबे दे कैन अब्सॉर्ब द प्राइस राइज मोर इजीली. किंतु गोटे गरीब लोक गोटे पुअर पीपल माने सेटा करि परिबेनी. ठीक अछि. सो हमर एटा करेक्ट हेजिबो. एठू आमे गोटे पॉइंट लिखिबे इन्फ्लेशन इज रिग्रेसिव माने हेला affects poor more, so it increases inequality. Which of the following Harappan site is known for its unique water management system featuring reservoirs and stepped wells? Factual question अच्छी 10 seconds दौची. मोहेंजोदारो, हरप्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी. आंसर हम धोलावीरा एथिरे गोटे एडवांस्ड वाटर हार्वेस्टिंग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तांकर थिला एंड रिजर्वोयर सिस्टम थिला
unparalleled in other Harappan cities. So the answer will be Dholavira. It had the unique water management system featuring the reservoirs and stepped wells. Question number 21. The presence of fire altars in Kalibangan indicates which cultural feature of the Harappan civilization? First, worship of Indra, Vedic Yajna tradition, then option number C, proto-religious ritualistic practices, then option number D, strict priestly dominance. आंसर होगा सी प्रोटो रिलीजियस रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस काइना जो फायर अल्टर्स थिला हड़प्पन साइड्स रे से इंडिकेट करे कि जो अर्ली रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस चलीथिला नॉट नेसेसरीली द वैदिक यज्ञस सो आंसर होगा सी प्रोटो रिलीजियस रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस Question number 22. Which Harappan site is associated with the maritime trade and contains a dockyard structure? Lothal, Kodiji, Suktagendor, then Chanhudaro. Answer is A. लोथल लोथल रो गोटे बेसिन लाइक स्ट्रक्चर थिला आ सेटा आइडेंटिफाई होतला एज एन एंशिएंट डॉकयार्ड एंशिएंट एंशिएंट डॉकयार्ड जोटा कि लिंक करूतला हरप्पन्स विथ द मैरिटाइम ट्रेड आंसर हबो ए Standardized brick ratio 1:2:4 in the Harappan cities indicates absence of uniformity, technological primitive stage, centralized planning and measurement system, religious control over the architecture. Answer is C. जो यूनिफॉर्म ब्रिक रेशियो रहा जहाँ भी 1:2:4 थिला across the sites जो sites गुड़ा भी थिले they show a centrally regulated measurement system. In the Rigvedic period, which of the following was basic political unit? Janapada, Mahajanapada, Jana, then Rashtra. Basic political unit कौन थिला ऋग्वेदिक पीरियड रे फैक्चुअल क्वेश्चन एगुडा सब एथरे किछि बुझिबार नै जस्ट इफ यू नो आंसर हम एठी हमर सी जन जन बा ताकू कोन कहवा जाय ट्राइब भी कहवा जाय एटा थिला फंडामेंटल पॉलिटिकल ग्रुपिंग इन द ऋग्वेदिक एरा 25th question. Which deity in the Vedic pantheon was associated with the cosmic order? Agni, Indra, Varuna, Mitra. 10 seconds दोजी Answer of C. Varuna. He is the guardian. He was the guardian in the cosmic moral order. 26th question. Term Gavishti in the Rig Veda refers to cattle raid, ritual sacrifice, land ownership, or clan assembly.
जो गाविष्ठी एठी जो टर्म यूज होईची तार लिटरल मीनिंग होची सर्च फॉर काउज। ठीक अछि डिनोटिंग कैटल रेड्स तो सेटा कोन डिनोट करछि कैटल रेड्स व्हिच आर सेंट्रल टू द ऋग्वेदिक इकोनॉमी। आंसर इज ए। 27th question, which feature makes a major difference between the Harappan and the Vedic religion? Polytheism, fire rituals, worship of the female deities, anthropomorphic gods. आंसर हम डी anthropomorphic gods। वैदिक रिलीजन से माने कौन करथिले से माने प्राइमरीली फोकस करथिले आ ऊपर एंथ्रोपोमॉर्फिक डेटीज मानको ऊपर एंड जो हरप्पन सिविलाइजेशन हमर थिला हरप्पन रिलीजन थिला दे हैड सिंबॉलिक और नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। The transition from Jana to Janapada in the later Vedic period indicates decline in monarchy, emergence of the territorial sovereignty, return to nomadic life, collapse of social hierarchy. जन आमे ऊपर डिस्कस करिसे ट्राइब्स भी कहउतले जो ट्रांजिशन ता हैला जन रु जनपद को लेटर वैदिक पीरियड रे सेटा कोन इंडिकेट करूचे। आंसर हम बी emergence of the territorial sovereignty। जन कोन थिला ट्राइब बेस्ड पॉलिटिक्स एंड जनपद कोन टेरिटोरियल स्टेट्स by the emergence of the territorial sovereignty भी कहि थाउ। आंसर हम बी 28 रो। 29 Harappan long distance trade with the Mesopotamia is confirmed by the presence of cuneiform tablets, Harappan seals at the Mesopotamian sites, the Vedic tomb, Meluha, bronze weapons. (29) answer above B. Harappan seals at the Mesopotamian sites. Harappan seal जोगुड़ा के Mesopotamian excavations रे देखा गले they confirm the trade links. 30. The later Vedic period saw the rise of the large sacrificial rituals such as the Ashwamedha, primarily to enhance agricultural productivity, assert royal authority and sovereignty, promote the religious equality, encourage monotheism. आंसर हम बी एजर्ट रॉयल अथॉरिटी एंड सोवरेंटी। राजा माने कोन करूथिले से माने बहुत बड़ ग्रांड यज्ञ से माने परफॉर्म करूथिले टू एजर्ट द सुप्रीमेसी ओवर rival clans and territories to assert royal authority and sovereignty. Answer above B. Undeciphered Harappan script is generally considered alphabetical, purely ideographic, logosyllabic, pictographic with numerical elements. आंसर हम लोगोसिलाबिक। केमती जो बहुत गुडे स्कॉलर्स थिले से टाइम रे से माने गोटे लोगोसिलाबिक नेचर को प्रपोज करूथिले कंबाइनिंग सिंबल्स
and phonetic elements. दीटा जाक यूज होता तो आंसर हम लोगोसिलेबिक. Which agricultural product is distinctly associated with the Harappans but absent in the Vedic texts? Harappan रे एटा देखा जाउतला agricultural product टा किंतु Vedic text से आरो कोनोसी उल्लेख नाही. Barley, cotton, wheat, sesame. आंसर हम आमर कॉटन. कॉटन हरप्पन्स माने ग्रो करुथिले किंतु तार सेमती कोनोसी रेफरेंस देखा जाय नै वैदिक टेक्स्ट रे. सो द आंसर इज कॉटन. The absence of palace structures in the Harappan city suggests lack of political organization, strong egalitarian tendencies, non-existence of elite groups, limited architectural knowledge. Answer of B. Strong egalitarian tendencies. Harappans जो माने थिले, they appear to have had less hierarchical urban design without the grand royal residence. What exception achi? Without the Vedic term grammar originally meant village, extended kin group, cattle herd, clan chief. Dimple Swai 33 ର ବି absolutely correct. Very good. 34 आंसर करो. 34 ର आंसर हबो सी cattle herd. जो अर्ली वैदिक कॉन्टेक्स्ट रे ग्राम माने होची denotes a moving cattle unit, not a village. ग्राम रु एठी समस्त कंफ्यूज हे पारे. ग्राम कहले विलेज एठी मारी पळे आसबे नहीं. नहीं जदी नोट्स को बार बार रिवाइज करथिबे ताहले मने पड़िबो कि ग्राम एठी वैदिक टर्म रे ता माने होची cattle herd. Which text marks the beginning of the philosophical thought that departs from the ritualism in the Vedic tradition? Brahmanas, Samhitas, Aranyakas, Upanishads. क्वेश्चन पचारची आ भितरु को टेक्स्ट सेटा गोटे बिगिनिंग हिसाब रे प्रूफ हैला फॉर फिलोसॉफिकल थॉट जोटा कि रिचुअलिज्म ठारो बियॉन्ड थिला, बियॉन्ड द रिचुअल यज्ञस और रिचुअलिज्म इन द वेद जोटा कि वैदिक ट्रेडिशन रे बहुत प्रोमिनेंट थिला. आंसर इज 35 रा डी उपनिषद्स. उपनिषद्स से कोन एक्सप्लोर करथला? उपनिषद्स एक्सप्लोर द मेटाफिजिकल क्वेश्चंस that are beyond the ritual yajnas or the ritualism in the Vedic tradition. The possible drying up or shifting of the Ghaggar-Hakra river system is considered a major reason behind expansion of later Vedic settlements, decline of Harappan urban centers, migration of the Indo-Aryans into India, rise of Janapadas.
35 रो जो माने डी आंसर देचंदी वेरी गुड दीपांजलि सिन्हा एंड डिंपल स्वाइन 36 रा आंसर हबो बी डिक्लाइन इन द हरप्पन अर्बन सेंटर्स जो आर्कियोलॉजिकल और क्लाइमेट स्टडीज रहिला से माने इंडिकेट कले कि जो इकोलॉजिकल स्ट्रेस एटा कंट्रीब्यूट कला टू द हरप्पन डिजाइन एथ्रु इकोलॉजिकल स्ट्रेस हला काहे कि ना ड्राइंग अप और शिफ्टिंग ऑफ द घाघर हकरा रिवर सिस्टम it provided ecological stress contributing to the Harappan decline. The Varna system in the early Vedic period was primarily based on birth, ritual purity, occupation, sect membership. (37) आंसर हम सी कहना जो वर्ण सिस्टम रहिला अर्ली वैदिक पीरियड रे से आगुरु इनिशियली ऑक्युपेशनल कैटेगोरीज को रिफ्लेक्ट करूला नॉट हेरेडिटरी डिविजन्स नॉट hereditary divisions. Assertion reason question. Assertion कहला Harappan civilization is considered more urban than the Vedic civilization. Reason हुजी Vedic society was largely pastoral and village based with limited evidence of planned settlements. समस्ते स्टेटमेंट्स पढ़ी सारथिबे आई होप ऑप्शन को नउची मु बोथ दीटा को चारटा जाक ऑप्शन पढ़ो कोटा कोन करेक्ट आ कोटा कार एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हिची आंसर अकॉर्डिंगली आंसर अब ए दीटा जाक करेक्ट अछि एंड आर रीजन बी assertion ର करेक्ट एक्सप्लेनेशन केमिति जो अर्बन प्लान्ड हरप्पन सिटीज जो गुडी को थिले ठीक अछि दे कंट्रास्ट शार्पली विथ द प्रीडोमिनेंटली जो रूरल वैदिक सेटलमेंट्स थिले तांको भीतर गोटे स्टार्क डिफरेंस थिला सो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द assertion 39th question at the 56th International Film Festival of India IIFI UNICEF's participation primarily focused on global climate action films, films on childhood rights and resilience, films promoting anti-poverty campaigns, films on digital education. एटी यूनिसेफ देखि कि समस्ते एटी लॉजिकल गेस करिया को ट्राई करन जो मानको डायरेक्टली आंसर भी जणा नाही ऑलरेडी मु हिंट दे सरलेनी यूनिसेफ 39 रा आंसर वा बी फिल्म्स ऑन चाइल्डहुड राइट्स एंड रेजिलियंस जो यूनिसेफ क्यूरेटेड फिल्म्स रहिला से कोन हाइलाइट करे चिल्ड्रंस का राइट्स और रेजिलियंस हाइलाइट करची एट द 56th IIFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 40. The United States designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, MNNA, primarily enhances trade relations, cultural exchanges, defense cooperation and arms deals, tourism partnerships. यूनाइटेड स्टेट्स जेतेबेले साउदी अरेबिया को गोटे मेजर नॉन नाटो एली डेजिग्नेट करूची सेटा प्राइमरीली कोन एनहांस करूची ट्रेड रिलेशन कल्चरल एक्सचेंजेस की डिफेंस कोऑपरेशन एंड आर्म्स डील और टूरिज्म पार्टनरशिप टाइम ओवर 10 सेकंड्स हबा सी डिफेंस कोऑपरेशन एंड आर्म डील सो MNNA स्टेटस सेटा रहिला इट बूस्ट द डिफेंस एंगेजमेंट
and advanced military collaboration. Answer about C. Forty-one. According to SBI research, India's projected GDP growth for quarter two, second quarter FY26 is 6.8, 7, 7.2 or 7.5%. Answer is D. Actually 7.5%. ଆଉ RBI कौन predict करछि कि 7% हबो बोली. As per the MOSPI, the unemployment rate for the person aged 15 plus in India stands at 4.8, 5.2, 6.1 or 7.4. Answer of B, 5.2%. Amrit scheme ऊपर question अच्छी under India's health sector primarily aims at Amrit scheme रो aim कौन establishing medical college कि reducing out of pocket a healthcare expenditure or surveillance of infectious diseases increasing medical insurance coverage only. Answer of B, अमृत हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करने को ट्राई करूची एंड सपोर्ट करने को चेष्टा करूची यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल्स. 44th question, DRDO's newly developed high energy microwave weapons and the EMP systems are intended for what? Agricultural monitoring, electronic warfare and multi-layered defense, maritime navigation or industrial manufacturing. आंसर हम बी इलेक्ट्रोनिक वारफेयर एंड मल्टीलेयर्ड डिफेन्स कहीं जो सिस्टम गुड़िक रही से गुड़िक काउंटर करती इलेक्ट्रोनिक और ड्रोन थ्रेट्स थ्रू द डायरेक्टेड एनर्जी. 45th, India's participation in the 12th ADMM Plus focused on trade policy discussions, digital taxation reforms, defense cooperation with the Asian partners, climate adaptation strategies. सी डिफेन्स कॉपरेशन विथ एशियन पार्टनर्स कहीं जो एडीएमएम प्लस ये जो रहा एटा हूँ गोटे डिफेन्स मिनिस्टर मानकर फोरम जो थे कि इन्वॉल्व कौन रोचंदी एशियन एंड पार्टनर कंट्रीज बुझेला. Puri beach receiving 7th blue flag certification signifies achieving highest tourist arrivals, meeting global ecotourism and cleanliness standards, being India's longest coastline, hosting international sports events. Very easy question. एक्चुअली आंसर हम बी समस्ते ऑप्शन देखि जानी परथिबे. ब्लू फ्लैग स्टेटस सेटा कोन हाइलाइट करे कि बीच केते इको फ्रेंडली बा केते क्लीन बा सेफ बीच. सो आंसर हम बी मीटिंग ग्लोबल इको टूरिज्म एंड द क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स. 47 Odisha Mobile Veterinary Service under the Mukhyamantri Bhramyavan प्राणी चिकित्सा सेवा launched केतरा vehicle launch हेची 101 121 181 or 250. Answer about 181 vehicles launch heची. They are flagged off to support what? Livestock health. The Odisha government doubled allocation to the Special Development Council to support women SHG, tribal welfare in the 9 districts, urban infrastructure or renewable energy projects. Answer of our B.
कहना जो एसडीजी फंड टा रेज हेची सेटा रेज हेची टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर and development. 49th assertion reason question achi. Sunapur beach in Odisha earned blue flag certification for the third consecutive year. Reason is blue flag certification is awarded based on strict global criteria for environmental management, safety and water quality. Answer of A. Dita jaka correct achi and reason be in fact correct reason provide koruchi, correct explanation provide koruchi for assertion. Sunapur it indeed see retain karichi tar blue flag certification ku. ଆଉ जो certification ରହିଲା it is based on globally defined eco quality standards. Last question of the day. लिस्ट 1 रे स्कीम देइछि बा इनिशिएटिव देइछि और लिस्ट 2 रे तार ऑब्जेक्टिव और फीचर्स देइछि स्कीम को तार एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव संगे मैच करिवो फर्स्ट आमो हॉस्पिटल स्कीम चीफ मिनिस्टर इनोवेशन स्कॉलरशिप मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स देन अमृत स्कीम देन लिस्ट 2 रे तार सब ऑब्जेक्टिव्स देइछि रीड द क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली आंसर अब ए आम हॉस्पिटल स्कीम रो ऑब्जेक्टिव होची पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड देन चीफ मिनिस्टर्स इनोवेशन स्कॉलरशिप रो ऑब्जेक्टिव इज स्टूडेंट सपोर्ट फॉर इनोवेशन देन मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स रो ऑब्जेक्टिव एठी हमें प्रीवियस गोटे क्वेश्चन रे डिस्कस करले लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर थ्रू द मोबाइल यूनिट्स देन 4 रो ए अमृत स्कीम होची रिड्यूसिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर सो आंसर अब ए सो दैट इज इट फॉर टुडे 50 टा क्वेश्चन हमें आज डिस्कस कले फिफ्थ मॉक टेस्ट रो नेक्स्ट क्लास रे हमें नेक्स्ट मॉक टेस्ट रो आंसर एंड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करबा एंड जहां भी एटी डिस्कस करा हला ताको नोट करथिबे for it will be beneficial for your last minute revision okay so thank you